जैसे आदित्य जी आप बोल रहे थे कि आज फिर एक बार चाइना अंदर घुस गई है, आक्रमण किया है अपने जमीन पर, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चाइना पीछे हटेगी। ये इंडिया की ताकत बनते जा रही है। आज उद्धव जी, शरद पवार साहब आपसे बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम कल और परसों 31 अगस्त एंड 1 सितंबर के इंडिया मीट की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सभी प्रमुख नेता, सभी प्रमुख दल जो पटना में थे, जो बेंगलोर में थे, वो मुंबई में आ रहे हैं। लालू यादव जी का आगमन हो गया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का आगमन हो गया है, ममता बनर्जी का आगमन हो गया है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, सब प्रमुख नेता कल आ जाएंगे। अखिलेश जी आएंगे, नीतीश कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, ये सभी मुख्यमंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, यहां स्टालिन साहब, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी नेतागण आएंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंकाएं है, उस बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक विनती करूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लंबा मत खींचिए। जो काम की बात है वो करिए। और अब मैं नाना पटोले जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की मीटिंग होने जा रही है। उसकी तैयारियां पास पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के कल्चर के आधार पर, महाराष्ट्र के संस्कृति के आधार पर आए हुए मेहमानों का उसी तरह सत्कार किया जाएगा। और इंडिया अलायंस में बढ़ती शुरू है। बेंगलोर में हम लोग 26 लोग थे, यहां आने के बाद 28 हुए। जैसे हमारे मित्र संजय राउत ने जी कहा कि चाइना अरुणाचल में अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है। जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन पीछे हटेगा। और इसीलिए आज हम एनडीए के तरफ से आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के नेता, राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, हमारे अशोक चौहान जी आपसे वार्तालाप करेंगे। इंट्रोड्यूस हमारे मित्र संजय राउत जी ने आप लोगों को कराया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अशोक जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय शरद पवार जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय नाना पटोले जी, मंच पे बैठे हुए हमारे एमवीए के, महाविकास आघाड़ी के सभी हमारे नेतागण, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सब पत्रकार भाई बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और रक्षाबंधन की जिम्मेदारी जैसे हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूं। इसलिए
आगे बढ़ने से पहले आप तो जानते हैं कि ये इंडिया की इस मीटिंग की पूरी तैयारियां यहां पर बहुत जोर शोर से हुई है। सभी राजनीतिक दल तकरीबन पहले मीटिंग में तकरीबन 26 थे, आज 28 राजनीतिक दल इस गठबंधन में, महागठबंधन में, इंडिया की गठबंधन में आज शामिल हुए हैं और सभी पार्टीज के हमारे साथी बड़े जोर शोर से इस मीटिंग की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि इससे पहले 2 मीटिंग्स हमारी संपन्न हुई और ये तीसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है मुंबई में। तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है कि आज मुंबई की इस मीटिंग में सभी यहां पर मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जन्मभूमि है, संत महात्माओं की ये जन्मभूमि है और शाहू फुले अंबेडकर की विचारों की ये महाराष्ट्र है। इसीलिए मुंबई में इसकी मीटिंग होना एक अलग महत्व रखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्मनिरपेक्षता और कल्याणकारी राज्य के एक महान प्रतीक उनकी इमेज रही है। संत महात्माओं ने दिया हुआ मानवता और भाईचारे का संदेश हमेशा महाराष्ट्र हमने अपनाया है, उससे आगे हम बढ़े हैं और इसीलिए शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को लेकर इंडिया आगे बढ़ने का हमारा सबका उद्दिष्ट है, प्रयास है। और मुंबई खास करके जब महाराष्ट्र की बात हम करते हैं तो हमारी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। स्वतंत्रता आंदोलन हो, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन हो, औद्योगिक कृषि क्रांतियां हो, तो महाराष्ट्र हर रेवोल्यूशन में महाराष्ट्र हमेशा आगे रहा है और महाराष्ट्र ने देश को लीड किया है और राजनीतिक क्रांतियां भी जो जितनी हुई है वो मुंबई और महाराष्ट्र उसका एक केंद्र रह चुका है। दोस्तों, आज सबसे अहम मसले हमारे सामने हैं जो हम देखते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे हम लोग आवाज हमेशा उठाते आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दल, आज आपने देखा कि अगर पिछला इतिहास हम देखेंगे तो 2019 की जो चुनाव हुए थे उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टीज शामिल हुई है, सबने मिलकर 23 करोड़ 40 लाख वोट्स लोगों ने उनको दिए थे 2019 के चुनाव में और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में शामिल हुए जितने पार्टी, सिर्फ एक ही बात थी कि अलग अलग होने से वोटों का बंटवारा हुआ और 23 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 22 करोड़ वोटों से देश में अपनी ताकत बना सके। आज इंडिया के इस गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, जो बाकी जिन्होंने भाजपा ने तोड़ मरोड़ के सरकार जहां गिराई वो छोड़कर बात कर रहा हूं कि 11 चीफ मिनिस्टर्स इस हमारी इस गठबंधन में शामिल है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्य को भी तोड़ने का काम भाजपा ने किया है, पर आपने देखा कि कर्नाटक में तोड़ने के बावजूद दोबारा वहां पर ज्यादा अक्सरियत से हमारी सरकार वहां पर कर्नाटक में लोगों ने चुन के दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया के इस माहौल से आज जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हमारे सरकार तोड़ने के बावजूद भी महाराष्ट्र में दोबारा हमारी सरकार, हमारी एमवीए की और अन्य साथियों को मिलकर हम स्थापित करेंगे, ऐसे पूरी उम्मीद दोस्तों हमको है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सभी पार्टीज इसमें शामिल है। आदरणीय पवार साहब और ठाकरे साहब को भी आपको संबोधित करना है। तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ में हैं और बड़े ताकत के साथ में आने वाले चुनाव एक पॉजिटिव डे, हमारी सिर्फ किसी को विरोध करना ही इतना हमारा एजेंडा नहीं है। डेवलपमेंटल अलायंस मैं कहूंगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली। इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। इसमें शामिल जो होने वाले हैं वो 28 है, 28 और उनके प्रतिनिधि कल के मीटिंग के जो मौजूद रहेगी, इनका नंबर 63 है। 63 प्रतिनिधि
28 पॉलिटिकल पार्टी, इनका ये सम्मेलन कल से परसों से शुरू होगा। और जिस तरह से कई राज्यों से लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट के बारे में हम सुनते हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि एक अल्टरनेटिव फोरम देश में तैयार हो जाएगा कि जो देश में परिवर्तन करना है, ये परिवर्तन के लिए मजबूत होगा। और यही काम हम लोग करेंगे, इतना ही मैं कहता हूँ। और श्री उद्धव ठाकरे, इनके पास मैं माइक देता हूँ। आदरणीय पवार साहेब, व्यासपीठावर माझ्यासोबत बसलेले सर्वच माझे मान्यवर सहकारी आणि पत्रकार आणि तिन्ही पक्षाच्या पदाधिकारी बांधवांनो आणि भगिनींनो, मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमध्ये बोलणार आहे। जसं अशोकरावांनी रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिलेल्याच आहेत, त्याचप्रमाणे मी सुद्धा सर्वांना, देशातील सर्व माझ्या मातांना आणि भगिनींना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा देतो। आणि रक्षाबंधन केवळ एका दिवसासाठी असायला नको। राज्यकर्ता म्हटल्यानंतर आपल्या कारभारातला प्रत्येक दिवस हा महिला सुरक्षित राहण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे। महिलांना आपल्या देशात सुरक्षित वाटलं पाहिजे, असा राज्यकारभार करायला पाहिजे, असं शासन असलं पाहिजे। दुर्दैवाने तसं शासन आज तरी आपल्या देशात आणि राज्यामध्ये दिसत नाहीये। मधल्या काळामध्ये मी त्याच्यावरती भाष्यही केलं होतं। 1-2-3 दिवसापूर्वी माझी हिंगोलीत सभा झाली, त्याही सभेत बोललो होतो। कारण मी बातमी वाचली होती की खास करून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं गेलं होतं की मुस्लिम महिलांकडनं राखी बांधा, आणि तोच धागा म्हणजे रक्षाबंधनाचा धागा वेगळा आणि या बातमीचा धागा वेगळा। मी असं म्हटलं होतं की सुरुवात करायची असेल तर बिल्किस बानूकडनं करा। आणि मणिपूरमध्ये या 2 महिलांची धिंड ज्या पद्धतीने काढली गेली, ज्याप्रमाणे आपल्या महिला कुस्तीपटू तिकडे दिल्लीत बसल्या असताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, तर या सगळ्या महिलांना सुरक्षित वाटावं असं सरकार आणण्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत। और आप सभी तो जानते हैं कि पूरे देश को अपना परिवार मानने वाले सारे लोग जो देशप्रेमी हैं, मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष ये शब्द मानता नहीं हूं। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री, क्योंकि वो सरकार अभी गॅस पर है, सरकारच गॅसवरती आहे। आणि त्याच्यामुळे सिलेंडरचे भाव जर का कमी केले असतील तर मला काय त्याच्यात आश्चर्य वाटत नाही। 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी। आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई। क्यों 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? भाऊबीज काय 9 वर्षात झाली नव्हती? पण ह्या सगळ्या गोष्टी अब ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे कल और परसों, मुझे अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे, महायुति की बैठक करो, लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना। जो काश्तकार आज संकट में है, मैं खुद गया था और अब पूरे आप ही के माध्यम से मैं न्यूज पढ़ता हूं, देखता हूं, पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है। क्या कर रही है अपनी राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? आएंगे, कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आवश्यकता होती है, और उस वक्त जो मदद की जाती है वही मदद वो पूरे जिंदगी भर याद रखता है। और इसलिए ज्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करना चाहता हूं। बाकी सारी बातें तो हम
पूरे विस्तार से परसों करने ही वाले हैं, परसों वापस हम मिलने वाले हैं। लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही, ये बात सच है कि चले जाओ, मला वाटतं आपल्या मुंबईतच सुरुवात झाली होती, गवालिया टैंक, तो चले जाओ, चले जाओ क्यों, किसको, ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रस्ते पे नहीं उतरती, तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है। उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं, और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है, और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं, आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत, एकत्र राहू, आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशहाला बेड्या घालायला देणार नाही, ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत। धन्यवाद। शांत रहा, प्लीज सायलेन्स। एकच मिनिट, तुम्ही फक्त कोणाला प्रश्न विचारणार तेच सांगून करा। हेलो सर, उद्धव जी दो सवाल है मेरे। एक, गठबंधन से जुड़े किन मुद्दों पर आपकी चर्चा होगी, गठबंधन से जुड़े? दूसरा, सारी बातें अभी कहूं तो फिर कल की मीटिंग की आवश्यकता क्या है? संयोजक कौन होंगे उसको लेकर क्लैरिटी, क्या उस पर फैसला हो जाएगा इस बैठक में? संयोजक कौन होंगे इंडिया सारी गठबंधन? बातें आपको, जैसे मैंने कहा कि विस्तार से परसों आपके अरे सामने ठहरो, की उनका जाएगी, होने दो। क्योंकि ये सारे जो मामले हैं वो देश के लिए है। हमारे कोई काय त्याला म्हणतात खासगी गोष्टी काही आम्ही त्याच्यात करायला आलेलो नाही आहोत, देशाच्या गोष्टी आहेत, आणि हा देश आमचा परिवार आहे, हे देश आमचं कुटुंब आहे, आणि म्हणून आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। गठबंधन के कई साथी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। एक अरे त्यांना विचारू दे, अरे एक मिनिट त्यांना विचारू दे ना। रुको, क्या आप दोनों बनारस में या जहां से वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे संयुक्त सभा करेंगे? अरे चुनाव तो अभी दूर है ना, जब की बात तब देखी जाएगी। उद्धव जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से हम अलग अलग हा महत्वाचा प्रश्न आहे। नीती आयोगाने मुंबईमध्ये विकास करण्यासाठी त्यांनी एक आराखडा तयार केला आहे। महाराष्ट्रामध्ये खास करून आता केंद्राचं इकडे या ठिकाणी दखल आहे, म्हणजे मुंबईला वेगळं करण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे, डाव आहे, असं वाटतं का तुम्हाला? हा, तुमच्या प्रश्नाचा अर्थ हा सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये त्यांना तो समजलेला आहे, आणि आता लोकांच्या लक्षात आलं असेल की महाविकास आघाडीचं सरकार का पडलं। कारण मी मुख्यमंत्री होतो, माझे सहकारी इकडे बसलेले आहेत, अशोकराव आहेत, आदित्य आहेत, जयंतराव आहेत, थोरात साहेब आहेत। जयंतराव तुम्ही मंत्रिमंडळात नव्हतात, नाना तर अध्यक्ष होते, पण त्यावेळेला सुद्धा केंद्रात त्यांचं सरकार असताना असा कोणताही प्रस्ताव आणण्याचं धाडस त्यांनी केलं नव्हतं। मुंबई वेगळं करणं आणि मुंबई केंद्रशासित करणं हा डाव आता उघड झालेला आहे, पण आम्ही तिकडे सत्तेत असताना हा प्रस्ताव आणण्याची त्यांची हिंमत नव्हती, आणि आता सुद्धा हा प्रस्ताव आम्ही होऊ देणार नाही। ज्या क्षणी आमचं सरकार केंद्रात आणि राज्यात येईल त्यावेळेला हे सगळे जे काय आहे त्यांचे पाश आम्ही तोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही, आणि मुंबईची स्वायत्तता जी आहे, महाराष्ट्र आणि प्रत्येक राज्याची स्वायत्तता आहे, ती आम्ही आभारीत ठेवू। ह्याची सुरुवात दिल्लीपासून केली गेली। दिल्लीसाठी जेव्हा त्यांनी तो जो काही एक वटहुकूम वगैरे आणला, तेव्हाच आमच्या सर्वांच्या मनात भीती होती की हे सगळेजण, कारण आपल्या देशाला, आपल्या सरकारला केंद्र सरकार नाही, संघ राज्य पद्धतीचं सरकार म्हणतो आपण, प्रत्येक राज्याला समान अधिकार आहेत। अगदी 2-3 मोजक्या गोष्टी सोडल्या तरच केंद्राला त्याच्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे, पण हा हस्तक्षेप हा दिवसागणिक ते वाढवत चाललेत। राज्यांची आणि शहरांची स्वायत्तता मारून सर्व काही एकछत्रीपणा आणायचा, ही छत्री आम्ही तोडून मोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। थोड्या दिवसाची गोष्ट आहे,
सरकार आमचं दोन्हीकडे आल्यानंतर हे सगळे असे उपराटे निर्णय जे त्यांनी घेतले आहेत ते आम्ही पुन्हा उलटे फिरवल्याशिवाय राहणार नाही. उद्धव जी दो सवाल ऐसा है कि अरे बाकी लोगों को सवाल पूछो. हम अलग अलग विचारधाराओं के साथ एक आए हैं. उद्धव जी, अब विपक्ष लगातार ये कह रहा है. मराठी होने दो. हाँ, मैं एकदम मराठी देखिए पहले मराठी पूरा होने दो. पहले मराठी करो, बाद में हिंदी में बोले. हाँ, मराठी पहले मराठी करो. मराठी सर. हाँ, पहिले मराठी राहुल सर, महायुतीची एकीकडे ही बैठक सुरू असताना दुसरीकडे याच वेळी म्हणजे 31 आणि 1 दिवशी महायुतीची बैठक मुंबईत लावून घेतलेली आहे. म्हणजे एका बाजूला इकडे हे सुरू असताना राज्यात देखील हीच सेम टाइम बैठक लावणं काय नेमकं म्हणजे? मी त्याचं उत्तर दिलेलं आहे. कारण गेल्या वेळेची आमची मीटिंग होती त्यावेळेलाच एनडीएची मीटिंग लावली होती आणि मी परवाच्या सभेत म्हटलंय की आता एनडीएचा अमिबा झालेला आहे. एनडीएला आता आकार उकार काही शिल्लक राहिलेला नाही. जसा अमिबा एक पेशे जीव कसंही त्याला आकार उकार दिला जातो तशा प्रकारे आता एनडीए झालेलं आहे. सर, एक असा प्रश्न आहे की साधारणतः 4 राज्याच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होत आहेत. कुठे? आणि 4 नाही सर, राज्याच्या. तुम्ही जर कोणाला प्रश्न विचारणार ते सांगा. सगळ्याची उत्तर माझ्याकडे. दोघांना पवार साहेबांना आणि तुम्हाला एक प्रश्न आहे की 4 राज्याच्या निवडणुकांच्या सोबतच लोकसभेची निवडणूक लागण्याचे देखील संकेत दिले जात आहेत. आणि अशा वेळेस तुमच्या या इंडिया आघाडीच्या जागा वाटपाचा जो वेळ असेल किंवा जागा वाटपाची चर्चा असेल त्यासाठी राज्यात कमिट्या नेमण्यात आलेत का किंवा त्या चर्चा एकत्र आत्ता होणार आहेत का? असं आहे की आम्ही जागा वाटपाची चर्चा सुरू केली नाही. आमच्या पहिल्या 2 ज्या बैठका झाल्या त्या महत्त्वाच्या होत्या आणि उद्या इथून पुढचा आपला सामूहिक कार्यक्रम काय असावा याच्या संबंधीची चर्चा होण्याची शक्यता आहे. आणि त्या शक्यतेच्यामध्ये जर असा निर्णय झाला तर मग काही लोकांच्या ही जबाबदारी टाकली जाईल की तुम्ही अन्य राजकीय पक्षांशी डायलॉग साधा आणि याच्यातून आपण एकत्र जाऊ शकतो का त्या संबंधीचा अभ्यास करा. तर प्रश्न असा आहे की तुमची उद्धव साहेबांना तुम्हाला प्रश्न आहे. आपली प्रकाश आंबेडकरांसोबत युती आहे, मात्र त्यांचं असं म्हणणं आहे की मला या आघाडीचं निमंत्रण देखील नाही आहे, मी महाविकास आघाडीत देखील नाही आहे. एकूण युती आहे की नाही ते तुमचे? प्रकाश आंबेडकर आणि आमची युती गेल्या 23 जानेवारीला आम्ही जाहीर केलेली आहे. साहजिकच एक त्यांची गोष्ट बरोबर आहे की शिवसेना आणि प्रकाश आंबेडकर यांची युती आम्ही जाहीर केलेली आहे. आता या इंडिया बैठकीत किंवा इंडियाच्या आघाडीत येण्यासाठी त्यांची सुद्धा इच्छा आम्हाला प्रकाश आंबेडकरजींशी बोलून विचारावी लागेल आणि एकदा आम्ही एकत्र आल्यानंतर ते एकमेकापासून वेगळे होण्यासाठी एकत्र येत नाही. त्यांना सुद्धा व्यवस्थित त्यांच्याशी चर्चा करून जर त्यांची तयारी असेल तर ते सुद्धा या आपला म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी आणि देशात इंडिया याच्यामध्ये ते पण येऊ शकतात. उद्धव साहेब इकडे मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि त्यामध्ये ही इंडियाची बैठक होते. आगामी काळात मुंबई महानगरपालिकेची देखील निवडणूक होऊ घातलेली आहे. तर अशा वेळेला असं वाटतं तुम्हाला? कारण ज्या पद्धतीने चाललेलं आहे ती पद्धत त्यांना निवडणूक घेण्याचं धाडस ते करतील असं मला वाटत नाही. आणि आता जो आधी प्रश्न विचारला होता पवार साहेबांनी त्याचं उत्तर दिलं की 4 राज्यांसोबत लोकसभा, मी म्हणतो त्याच वेळेला महापालिका पण घ्या. याचा परिणाम दिसेल आपल्यासाठी फायद्याचा? परिणाम नक्की दिसणार आहे कारण लोक वाट बघतायत. धन्यवाद. आणि पवार साहेब एक सवाल असा आहे, उत्तर प्रदेशमध्ये मायावतींनी असं डिसिजन घेतलंय की ते तटस्थ राहणार आहे. तर यामुळे इंडिया आघाडीला काय वाटते? म्हणजे मायावती तटस्थ राहणार आहे, उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभाची जास्त सीट आहे. की मायावतीजी नक्की कोणाच्यावर एकत्रित जाण्याची भूमिका घेणार आहेत. आम्हाला असं दिसतंय की काही वेळेला भारतीय जनता पार्टीशी सुद्धा त्यांनी सुसंवाद ठेवलेला आहे. ते आज ठेवतील असं मी म्हणत नाही, पण या सगळ्या गोष्टीची स्पष्टता जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत याच्यावर निर्णय घेणं अशक्य आहे. पवार साहेब एक मिनिट त्यांना एक सवाल ये है कि पवार साहब आपसे और उद्धव जी आपसे दोनों लोगों से, क्योंकि ये अलग अलग विचारधाराओं का अलायंस है, तो ऐसे में इस पूरे चीजों को जब आगे बढ़ेगा तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लगातार चल रहा है. तो उसको लेकर क्या संयोजन समिति अलग से बनाई जाएगी? और दूसरा सवाल यह है कि विपक्ष जो सरकार में बैठे लोग हैं वो लगातार आप लोगों पर कह रहे हैं कि अभी तक
कोई चेहरा आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे तय कर लेंगे? बात ऐसी है कि अलग अलग पार्टीज है, ये बात सच है, मगर बैठ कर डिस्कस करके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम तैयार कर सकते हैं और मिनिमम एग्रीड प्रोग्राम इसके आधारित हम आगे जा सकते हैं। पवार साहेब, इंडियाच्या नहीं, एक ही मिनट। जो दूसरा सवाल आपने पूछा, हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है, क्या कौन बनेगा जो करोड़पति नहीं। साहेब, एक दोन प्रश्न क्या इसी डर से लगातार वो लोग ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा चुनाव हम एक साथ नहीं कराएंगे, क्योंकि उनका एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नेशनल वाइड पर ना पड़े, ऐसी उनको डर है क्या उनको? अभी उनके मन की बात मैं कैसे समझू? वो तो टीव्ही पे होती रहती है। पवार साहेब, मला प्रश्न विचारायचा आहे की इंडिया अलायन्सच्या बाबत थेट पंतप्रधानांपासून ते अमित शहा हे थेट आरोप करतात की एकतर भ्रष्टाचारी आणि घराणेशाही अशा स्वरूपाची ही अलायन्स आहे। याला उत्तर काय तुमचं? आणि पहिल्यांदा हे प्रधानमंत्र्यांचं भाषण भोपाळचं ऐकलं आणि भोपाळच्या भाषणामध्ये त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली, भ्रष्टाचाराची, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका केली। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका करत असताना त्यांनी राज्य सहकारी बँक आणि इरिगेशन घोटाळा या दोन गोष्टी कटाक्षाने त्यांनी सांगितल्या। माझा आग्रह एकच आहे प्रधानमंत्र्यांचा, ते प्रधानमंत्री आहेत देशाचे, जिथे सत्तेचा गैरवापर झाला अशी माहिती त्यांच्याकडे असेल तर त्यांनी सखोल चौकशी करावी आणि वस्तुस्थिती समाजाच्या समोर ठेवावी। नुसता आरोप करण्याचा अर्थ नाही, तुमच्या हातात सत्ता आहे, त्याची चौकशी करा आणि संबंध देशाला सांगा वस्तुस्थिती काय। पवार साहेब, एक प्रश्न असा आहे, पवार साहेब, आपल्यासोबत आपले काही सहकारी बाजूला गेले, त्यामुळे अनेक लोक आपल्या संभ्रमणात आहे। जे काही पार्ट्याज आहेत देशभरामधले, त्यांचाही संशय आहेत की पवार साहेब आमच्यासोबत आहेत आणि त्यांचे काही सहकारी भाजप सोबत आहे। हा संभ्रम मोठा आहे, लोकांमध्ये आहे, कार्यकर्त्यांमध्ये आहे। काही संभ्रम नाही, या लोकांना त्यांची जागा उद्याच्याला या राज्याचे मतदार दाखवतील। अजिबात स्पष्टता आमच्या सगळ्या हितचिंतकांच्या मध्ये आहे। पवार साहब, दिनेश पवार साहब, दो सवाल है। पवार साहब, असदुद्दीन ओवैसी, सवाल ये है कि आपने तो कह दिया कि संभ्रम नहीं है, भ्रम नहीं है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना के नेता कहते आए हैं कि लगातार भ्रम बना हुआ है। आज की जो पत्रकार परिषद है ना, वो इंडिया के बारे में है, अपने देश के बारे में है। कोऑर्डिनेशन हम लोग तो मिलते रहते, उस वक्त ये सारे सवाल जवाब हो सकते हैं। पवार साहेब, प्रश्न असा आहे, पवार साहेब, आपण सगळ्या विरोधी पक्ष, सगळ्या पक्षांना आपण उन्होंने मुझसे बात की है और उनकी तैयारी है हम लोगों के साथ जाने की। तो ये कोई अकेला इस पर डिसीजन ले नहीं सकता, इस पर कांग्रेस के साथ बात करनी होगी, उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ बातचीत करनी होगी और इस पर कलेक्टिव डिसीजन होगा। जब तक कलेक्टिव डिसीजन होता नहीं तब तक इन लोगों का जो सुझाव है इसका स्वीकार करना हमें मुश्किल है। क्या ओवैसी साहब और बीआरएस को लेकर बातचीत चल रही है आपकी? उद्धव जी, पवार साहब, क्या आज चूंकि बातचीत इंडिया बैठक की होगी, मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि कन्वेयर को लेकर के, संयोजक को लेकर के जो चर्चा चल रही थी, बताया जा रहा है, क्लैरिटी हम चाहते हैं
कांग्रेस से कहती है कि हम टीएमसी और दूसरे नेताओं के अंडर में काम नहीं कर सकते, दूसरी पार्टी कहती है हम कांग्रेस का कन्वेयर एक्सेप्ट नहीं कर नहीं, सकते। सुनो एक मिनट, इस सारे बातों का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, शायद मैंने आज एनडीए का संयोजक कौन है मुझे तो पता नहीं, आपके पास अगर जानकारी होगी तो आप दे दीजिए। तो क्या कोई संयोजक कोई decide किया जाएगा या 11 लोगों की कमेटी बनेगी? उद्धव साहेब दोन प्रश्न पवार साहेब क्या इस टीआरएस बैठक में अकाली दल आणि ओवैसी यांना पिछले बैठक में ये कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। संयोजक पिछली बैठक में तय हुआ था कि मुंबई के बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी सभी लोगों की, या फिर संयोजक जो है उस पर चर्चा होगी। क्या ये दोनों मुद्दे होंगे जो अलग अलग नाम आ रहे, कोई संयोजक चुना जाएगा? एक पहला सवाल है। नहीं, इसलिए तो मैंने पहले शुरुआत में कहा ना कि परसों हम दोबारा मिल रहे हैं और उस वक्त कल और परसों जितनी सारी बातें होगी आपके माध्यम से पूरी जनता, देश की जनता के लिए हम सबके सामने रखेंगे। उद्धव साहेब मुझे लगता है पहिला प्रश्न तुमच्यासाठी आहे, उद्धव साहेब पहिला प्रश्न तुमच्यासाठी आहे। तुम्ही मगाशी म्हणालात की इंडियाची बैठक आहे, इंडियाच्या विषयावरती बोललं पाहिजे। आज सगळे एकत्र आहेत, पण सातत्यानं सामनामधून शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावरती सातत्याने टीका केली जाते। हा विसंवाद का आहे की कुठेतरी सतत टीका होते आणि तुम्ही जेव्हा आम्ही आमचं वैशिष्ट्य आहे ज्यांच्यासोबत असतं त्यांच्यावर टीका करतो। आणि दुसरा पवार साहेब दुसरा प्रश्न असा आहे की साधी गोष्ट आहे, तुम्ही तुमच्या मीडियातनं टीका केली म्हणून आम्ही काम करायचं थांबवायचं का? तुम्ही तुमचं काम करा, आम्ही आमचं काम करतो। बरं पवार साहेब, शिवसेनेचे नेते मागणी करतात की उद्धव ठाकरेंना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करावं। जातो उद्या शपथ घेतो। पवार साहब दो चीजें सर, क्या बीआरएस अकाली दल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को साथ में लाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है? पवार साहब बात अभी तक हुई नहीं, मगर अकाली दल की इनकी एक भावना है कि इसमें साथ जा सकते हैं तो हम सोच सकते हैं, मगर इतना वो आसान नहीं है, क्योंकि हमारे साथ केजरीवाल है, पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ नीति अलग है, और इसलिए हम जिससे हमारे डिफरेंसेस बढ़ेंगे ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे। उद्धव सभी को धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने खत्म। Right, so there we heard it, the press conference by the India bloc. Obviously, we had seen Patna Parle, we had seen Bengaluru ki Baitak. Now this is Mumbai, and obviously the meeting will happen tomorrow and day after. Joining me to decode what this preliminary press conference would mean is Brajesh Pandey. Brajesh, while this press conference was on, we were discussing two things. First of all, the moot points about the convener, about the differences, the so-called differences. Nothing was touched upon that, and I believe rightly so. Secondly, you were also mentioning about the body language of Uddhav Thackeray. Please elaborate. Well, I think, if you look at the way, Uddhav was taking pot shot at Prime Minister, taking pot shot at the BJP, right, and also, the way he was replying to the questions related to the leadership of who's going to be the leader and convener of India is going to be. Right. I think, he was sounding very confident about it. And, the party was also, but usually, Uddhav is, I'm not saying that he's not confident when he speaks, right, but there was a degree of aggression, which we usually don't see much whenever Uddhav Thackeray speaks. So, I mean, that was there. And also the fact is that, there are doubts about who's going to be the convener, who's going to be the prime ministerial candidate, how is the party going to bury differences in their own respective regional space. Right. These are the tricky questions which has to be sorted out. And most importantly, we are at the end of August, so barely 7-8 months left for the election to take place. So they don't have much time on hand. But I think this meeting is going to be very crucial. Tomorrow and day after, Pankaj, and I think most of the irritants or who's going to be the convener as far as I.N.D.I.A is concerned, I think they will they should come to that decision, because the most important thing which of course they are aware
is that that they don't have much time in hand. If All they right. really want to give a solid fight to the NDA, who on the other hand, they're Absolutely. already galloping away as far as fighting election is concerned. Yes, sir, definitely. Brajesh, going back in reverse chronological order, one of the questions that one of the journalists asked Sharad Pawar was that OSC, BRS और अकाली दल को लेके what is the plan? उनसे बात हुई है कि नहीं? So after a few questions, then only Sharad Pawar responded saying कि देखिए अकाली दल का जहाँ तक सवाल है, केजरीवाल की सरकार है पंजाब में, तो हम नहीं चाहते हैं कि कुछ डिफरेंस पैदा करने वाली स्थिति हो. बट दिस इज somehow doesn't it apply on Delhi where Kejriwal is there in government but Congress also has been there in government, so how they are balancing it? See, I mean, you can not take Shiromani Akali Dal and still have an intact or an effective alliance, but you cannot not have Congress and have a workable coalition as far as this opposition thing is concerned. So Congress is very, very essential, essential ingredient in formation of I.N.D.I.A. So there is no way you can take away Congress, and also the fact that that there are certain differences between the Shiromani Akali Dal and the BJP. So the I think most of these parties would also want to see whether it degenerates into a more a fiery word of word in attack and counter attack as far as SAD and BJP is concerned. So it'll be very interesting to see how it formulates. But I think I mean they can do away with Shiromani Akali Dal, but Congress is a very, very quintessential if the formation of I.N.D.I.A is anything to go by. Right, Brajesh, and my next question, and I'm sure this is what is rankling in a lot of people's mind: how and when and why Congress has become so important, except for the size and the numbers that it brings to the table? Well, I think, Pankaj, if you look at the fact, and if you take all the past coalition is concerned, one party has to acquire the pole position, around which the rest of the parties can gravitate. Most of the parties are regional satraps. Mamata Banerjee limited to West Bengal, NCP Shiv Sena limited to Maharashtra, Arvind Kejriwal limited to Delhi and Punjab. If you go by Lok Sabha election, only Punjab. So, I mean, the Congress is the only party, who has a significant presence in several states. So I think the Congress has to be in the pole position if you want this particular coalition to work very effectively. I know there are apprehensions about Congress, especially about Rahul Gandhi. When it comes to Mamata Banerjee, when it comes to Arvind Kejriwal, and this is the reason why the Congress this time, Pankaj, decided to address the most contentious issue first, which was whether Rahul Gandhi is going to be the Prime Ministerial candidate or not, whether Rahul Gandhi is going to be the head of the convener or not. Rahul Gandhi has saved his party the embarrassment and a hard time by removing himself from the equation as we speak. What happens post post May 2024 remains to be seen. But if the Congress does exceptionally well, then I think without it doesn't require Einstein to say that Rahul Gandhi will be in reckoning for the post of Prime Minister. But barring that scenario, I think the Congress has, and if you remember, they said, the Congress leadership had also said, Rahul Gandhi especially, that the party is ready to make sacrifice. And I think this sacrifice is what has been made by Rahul Gandhi. And Mallikarjun Kharge is a far more acceptable, will be a far more acceptable face, or a Nitish Kumar will be a far more acceptable face as far as the convener is concerned. Because there are regional parties who don't like Congress, but there are regional parties who would love to see Congress acquiring the center stage. RJD is one case in point. Nitish Kumar is also not averse to seeing that the Congress be the, if I may borrow the quote of Lalu Prasad Yadav, the doula of the alliance which is working. But only to a certain extent. Of course, only to a certain. See, Pankaj, the point is, the real challenge will come when you seat distribution takes place, because there's so much complexity involved. In the state of West Bengal, in the state of Punjab, where in the state of West Bengal, I was talking to a couple of senior journalists there, also senior political leaders. They were saying that if you put everybody on the side of Mamata Banerjee, Congress doesn't fight any election at all. I think it will be far more advantageous for the BJP.
Other than the fact that if the Congress and TMC is fighting together against each other, the situation will be far more beneficial to Trinamool Congress. Because, if you remember 2019, many said the reason why BJP was able to win 18 was because, the Congress and the left were virtually decimated. So anybody who had an anti-Mamta or anti-TMC went to the Congress. But if you have a good Congress standing there, good Mamta standing there, the second you make the fight tripartite, I think, the chances gets better for the Trinamool Congress. So all these issues have to be discussed before that. Definitely. And since Brajesh mentioned the name Lalu Prasad Yadav, Brajesh, I wanted to, for the benefit of viewers, play a soundbite where Laluji, while departing for Mumbai yesterday at Patna airport, made did a commentary on what his real motive is to go to Mumbai. Let's listen in if we have that soundbite from Lalu Prasad Yadav. मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ हैं, और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब 24 में दिखाई देगा। और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ में है, राज्यसभा सांसद। प्रियंका जी, आज कितने नए साथी जुड़ने वाले हैं, कोई जानकारी? मैं आपसे यही कहूंगी, कल तक आप इंतजार करिए, सारे जवाब आपको मिलेंगे। और जो भी कहा जाता है ना कि जो मोमेंटम बन रहा है, वो आपको पता चलेगा। क्या अकाली दल आप लोगों के साथ आ रहे हैं? कोई बातचीत हुई है? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। मायावती जी ने तो इनकार कर दिया, अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ लिख दिया है। जब हमारे एजेंडा में जो हैं वो हैं, जो साथ में हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ लिखा है, तो हम उसको ज्यादा वो नहीं देंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर, राजू शेट्टी जैसे जो छोटे राजनीतिक दल हैं, उनको साथ लाने की कोशिश थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि आप लोगों के साथ आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि नहीं आ रहे। आप देखिए, आप सब लोगों के बारे में बात करेंगे, आप समिट के बारे में नहीं बात करेंगे। समिट में 26 पार्टियां आ रही हैं, इतने सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, सोनिया जी खुद आ रही हैं, राहुल जी कल आने वाले हैं। आप यहाँ का माहौल देख रहे हैं, किस तरीके से हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी, कमियां उनमें ढूंढने जिनमें कमियां हों। Right, so many faces, many voices, many opinions, obviously, and rightly so. Why not? We heard Uddhav Thackeray also having a go at the name of the prime ministerial candidate, obviously something which is weighing heavy on everyone's mind. And needless to say, what Uddhav Thackeray says is that they have a lot of options, but BJP doesn't. Brajesh, how do you read that? Well, I think, this is one question which every single top leader of I.N.D.I.A coalition is getting bombarded with, because this is what the BJP is saying, that, there are too many cooks who's definitely going to spoil the broth as far as this coalition is concerned. So I think Uddhav has retaliated in saying that we have at least so many prime ministerial candidates. Can you name any other prime ministerial candidate other than Prime Minister Narendra Modi? So basically he took a pot shot at the BJP for their over-dependence
dependence on Narendra Modi. But I think, the fact of the matter still remains that yes, leadership is going to be a contentious issue, but I think that stage will come much more nearer to, once you have clarity with the numerics as to, which party has won how many seats and which party is in a position to drive a very hard bargain as far as, the formation of the government or whatever at that point of time is concerned. Right. Now, Brijesh, stay with us. So, joining us is Kiran Tare, all the way from Mumbai. Kiran, मुझे लगता है all roads are leading to Mumbai today. And for the next 2 days, your city is going to host, obviously, a host of leaders. And as we saw the press conference, what are the key takeaways that you could share with us? Secondly, and what was something that you think was left out? Yeah, of course, Uddhav Thackeray has been the host of this meeting, and one thing is very clear that Uddhav is going to feed everyone with a very sweet Puran Puri. I'm telling you for that show. I have a concrete information. The sweets will be distributed in a Maharashtrian style. But if we look at what Sharad Pawar is saying, he clearly indicated that there will be a deliberation on common minimum program in the meeting tomorrow and day after, of course. So I think that is the biggest takeaway. They are not going to discuss the seat sharing. They are not going to discuss the prime ministerial candidate. They are not going to discuss who will be the convener and who will be the convener committee. But their focus will be the common minimum program. That is what I understand from what Mr. Sharad Pawar is saying. As far as Uddhav Thackeray and other people are concerned, they are not bothered about who is getting what shares. They are only concerned about their own share in the alliance. For example, if we take Uddhav Thackeray's party, that is Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray, he wants to contest 19 seats in Maharashtra. So out of 48, his only focus is that he should get 19 seats to contest. The rest can be divided into the NCP and the Congress. But if Uddhav Thackeray is somewhere, he is convinced that he is not getting 19 seats, then what will be his strategy? Then what will be his planning? That will be a very contentious issue. When I talked to a senior Congress leader, he said that there could be a formula of 18-18-18 as far as Maharashtra is concerned. So all three parties will be getting 18 seats, but Uddhav is not willing to give up on even a single seat. In that condition, I don't know how this I.N.D.I.A alliance will further move ahead, whether Congress will take a step back or whether Sharad Pawar will take a step back. That will be a very interesting situation to watch it. But here also again, when we talk about Sharad Pawar's party, the NCP, how many seats he is going to get? He had won 4 seats last time when Ajit Pawar was within the party. Now Ajit Pawar has joined hands with the BJP. What will happen to Sharad Pawar's plan, whether he will continue with the same plan or whether he will patch up with Ajit Pawar, that everything depends upon. So, and of course the third party is the Congress. Congress is one party which will be very happy because Congress is growing in Maharashtra. My information is that Congress is growing in Vidarbha and Marathwada regions, and that is a very good sign for Congress. So Congress is quite relaxed, but Congress is entirely depending upon the national leadership to discuss this very contentious issue of seat sharing. Right, Kiran, talking about the number of seats and the understanding on that, we would come back to you. But first, let's listen in to Uddhav Thackeray. And then I have a question for you, Kiran. Let's listen to Uddhav Thackeray first. अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही, ये बात सच है कि चले जाओ, मला वाटतं आपल्या मुंबईतच सुरुवात झाली होती, गवालिया टैंक, तो चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना. अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रास्ते पे नहीं उतरती, तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे. हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है. उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं, और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है, और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं. So obviously a very confident, Uddhav Thackeray. Brijesh and I were discussing also about his body language, and certainly front foot, jisko kehte hain, he appeared to be on front foot today. My question to you is talking about sacrifices also, because this coalition or combination obviously can't succeed unless personal ambitions or the party-wise
priorities are not either set aside, compromised, or given away for others' benefit. What is it that UBT stands to either gain or lose should things go as planned? Of course, if UBT gets 19 seats as per Uddhav Thackeray's desire, then it will stand in the race. Because at present, Uddhav Thackeray has only the support of only 7 MPs with Eknath Shinde. So if Uddhav Thackeray wants to remain as a force in the state, he wants to win at least 19 seats, which he had won in 2019. But my information is that Uddhav Thackeray Right, we will quickly connect with Kiran once again. Brijesh, what Kiran was mentioning obviously is about the magic figure of 18 to 19 Lok Sabha seats that Shiv Sena obviously is eyeing and would be happy. One final word before we wrap up this show. There has been, incidents in the past also when jo kehte hain na, they have reached the bridge, but when it comes to crossing it, the parties at times disintegrate. Is there a possibility? I know it's too early, but how do you see it panning? Well, one thing is there that if I may, if you go by the off-the-record conversation is anything to go by, one thing is very clear that the opposition parties are also aware of a threat called ED. And it figures so many times that it's astonishing to talk to people here in Delhi. And the opposition parties are also aware of the fact that if they are not able to make a substantial dent to the BJP in 2024, the situation will become very, very difficult for them post that. And that is the reason I think that the threat is something which might force them to stay united. But history is replete with examples where, a desire of a seat extra or a desire of couple of seats extra led to unraveling of the entire coalition which has been so painstakingly formed. Right. And if that happens, then BJP will laugh all the way to the power, Voters Bank. to 7 LKM, if I may say so, in 2024. Nonetheless, as Uddhav Thackeray said कि चुनाव अभी दूर हैं, जब होगा तब देख लेंगे. Let's hope, but all the very best to the India bloc for their meeting tomorrow and day after. Thanks to Brijesh Pandey, my colleague, and also Kiran Tare joining us all the way from Mumbai. And thanks to our viewers for watching this broadcast. Thank you. He thought he could outlast us. And 1 year later, the evidence is right here in this room. Who will blink first? So far from preventing the expansion of NATO, Russian actions have actually resulted in the expansion of NATO. It's a mess for Russia and it's a mess for the Western world, for NATO and the United States. Putin is a dictator, and if he loses, that means the end of his regime, and probably of him personally. So he has to keep going. Year 2, no end in sight. Streaming now. The historical moment, and it's here. Magnus Carlsen, the world champion, loses to 16-year-old Pragnananda. The beauty of sports is the emergence of new heroes and the triumph of the underdog. Chennai teenager R. Pragnananda too finds himself in that bracket. Having made heads turn in the chess world with his achievements, the 16-year-old prodigy seems to have made a habit of vanquishing world champion Magnus Carlsen every time they square off. The Chennai boy has been able to get the better of Carlsen twice in 3 months, a feat which other higher-ranked players have not been able to achieve. Pragnananda is riding a crest, and chess may seem a renewed interest in the sport in the country.
popularity of chess in India is down to one man, Vishwanathan Anand. His laurels have put India on the world chess map, and Pragnananda too is hoping he can reach those exalted heights. Chess is to Chennai what cricket is to Mumbai and football is to Kolkata. Pragnananda comes from a state known for its love for the game. And his meteoric rise is a testament to the dedication and passion he has displayed from a very tender age. My sister started to play chess at the age of 6. Back then I was 2 and then I started to watch her play at home. Yeah, that's how it started. I used to go and knock her pieces off when she's practicing. My parents got me a chess board. I didn't really go to that kind of school life because from start it was just chess. First standard I started to go to tournaments very seriously. I started to come talk to internationals. Chess in India is basically because of Anand sir. Yeah, he started everything. When I started to play chess, he was the world champion at that point. So he definitely had a huge impact on me. I think Olympiad is right move because a lot of people now follow and take chess seriously. I think Olympiad happening in India is a great thing, and that too in Chennai we're just very proud of it. There's so many, around 2,000 people will come to Chennai and play Olympiad. From having only 3 grandmasters in the 90s in India to a whopping 73 grandmasters in 2022, the game has witnessed a stratospheric rise in acceptance in the past decade. Primary reason is, I think, a lot of investment done by the parents, because see, we don't have a system of training in this country, let's face it. So a lot of private initiative, parents who are resourceful are helping their kids go out and play. Some manage to get sponsorship for their children, and a lot of foreign coaching under some good grandmasters, not necessarily overseas, but Indians do have a few grandmasters who have now turned to coaching, like R.B. Ramesh or Praveen Thipse, and there are so many of them, Swapnil Dhopade and so on and so forth. Now they have taken up coaching, and that has been the biggest reason for Indians getting quality coaching, and now they know the way to approach the grandmaster's title. Staying grounded is how Pragnananda and his family feel is the best way to tackle fame and success. வைஷாலி பிரக்யா அவங்களே மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க. சின்ன வயசுலேயே செஸ்ஸும் ஸ்டடீஸும் மேனேஜ் பண்ணி அவங்களே ஒர்க் ஹார்ட் அவங்களே பண்ணுவாங்க. நான் பேக்ல ஒரு சின்ன சப்போர்ட் தான். அவங்களே மேனேஜ் பண்ணி அவங்களே கிளாஸ்க்கு போறது, ஒர்க் பண்றது, இன்ட்ரெஸ்டா எல்லாமே 2 பேரும் பண்ணுவாங்க. When sporting activities were hit hard due to the COVID-19 pandemic, chess was one sport which kept ticking. Thanks to technology, as online tournaments kept players busy, and there has been a spurt in the number of online chess events during this coronavirus-forced lockdown. Yeah, chess didn't get affected by pandemic because we can just sit with the laptop and play online. It was difficult because there was no board events, but it was not so much bad compared to other sports as they couldn't practice even. In chess, one good thing is we can have young champions. In other sports, usually they're Sachin Tendulkar or Virat Kohli, they're only in their 20s or so. But in chess, it is possible to have heroes as young as a 10-year-old child. So that is one good thing. It can attract the young minds easily.